In a strong message to ensure the timely execution of development work, Odisha Panchayati Raj and Rural Development Minister Robin Narayan Naik warned on Monday that officials would be held accountable for project delays. Monthly reports must now be submitted to senior authorities, the minister said following a review meeting of the department. As part of Odisha's Vision 2036 to become a developed state, several infrastructure projects are being accelerated. The government has set an ambitious goal of constructing 30,000 to 40,000 kilometers of roads across the state before the 2029 general elections. Under the Setu Bandhan Yojana, around 500 new bridges will be constructed. Housing, bridges, and roads have been marked as the top priorities of the department. Minister Naik also revealed that Mukhyamantri Sadak Yojana aims to complete 5,000 kilometers of rural roads, while the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana will cover around 2,000 kilometers across 8 districts in the first phase. सही दृष्टि आम 30,000 ରୁ 40,000 किलोमीटर रास्ता तैयारी करिबु 500 सेतु बंध योजना रे सेतु तैयारी करिबु ता भितरे एक ब्रिज कम वेयर करिबु जोठी पानी रखी हेबो पानी रो उत्स तैयारी हेबो ए प्रकार निर्णय नैछु एवं विभिन्न कोठा सहित विभिन्न विभाग रो इंफ्रास्ट्रक्चर को आमे आगो को बढ़ेबा पई निष्पत्ति नैछु तारि भितरे आमे जो आलोचना करिछु ए आलोचना रे गृह सेतु रास्ता उपरे आमे प्राधान्य दी आलोचनार परिधि भितरे आलोच्य विषय होइछि एवं विभागर कर्मकर्ता माने अछंती जो माने कि 60 डिविजन रे ओडिशा प्रदेश रे आम विभाग काम करूछि ए 60 डिविजन रो जो माने चीफ इंजीनियर अछंती एससी अछंती एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अछंती डबल एचडीओ अछंती असिस्टेंट इंजीनियर अछंती एवं जेई अछंती एमानकर माध्यम रे ए सबु कामर निर्णय हबो जदि समय अवधि भितरे से माने काम संपूर्ण न करिवे ताहेले विभागीय अधिकारी माने भी दायी रहिबे।